फिजिक्स इंट्रोड्यूस होती है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू लर्न इज द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, एंड उसके बेसिस पे, उसको बेस मानते हुए हम लोग बाकी सारी चीज़ें डेवलप करते जाते हैं, बाकी सारे जो भी थ्योरीज वगैरह हमने पढ़ी है। ओके, so in the same way, any kind of discipline will be understandable to you only and only if you understand theory. बट ये थ्योरीज हैं क्या, और ये कैसे डेवलप हुई, इसका मतलब क्या है, ऑल दैट स्टफ वी हैव टू गो समवॉट बैकवर्ड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग विच इज नेवर रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। आपको कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही आएगा, बट द थिंग इज यू शुड नो अबाउट इट सो दैट आपको चीज़ों का कंटेक्स्ट समझ में आए। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, वाई डू यू ज्वाइन क्लासेज या आप लोग कॉलेजेस वगैरह में क्यों जाते हो, व्हेन द मटेरियल इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, या आपके पास बुक्स, सारे बुक्स हैं, बट इन द बुक देर इज ओनली द टेक्स्ट, बट द कंटेक्स्ट हैज टू बी अंडरस्टूड विथ रिस्पेक्ट टू दैट टेक्स्ट। वो टेक्स्ट लिखा क्यों गया, किसी ने कोई बात बोली तो ऐसा क्यों बोला, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने ये बात बोली। ठीक है, तो वॉट एवर ह्यूमैनिटीज और वॉट एवर ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन हैज बीन क्रिएटेड, बी इट philosophy, be it geography, be it history, be it anthropology, sociology, psychology, economics, whatever it is based on our previous experiences, हमारे historical experiences पे based है, और मे बी द पॉलिटिकल डोमेन और पॉलिटिकल एरा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस समय की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, उन्होंने हमारी सोच को शेप अप किया है, या फिर वॉट एवर वी रोट वॉज टू सपोर्ट एट दैट पॉलिटिकल एरा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे वो कई सारी थ्योरीज बनने लगी। तो वी शुड लुक इन टू द पास्ट, that what actually happened in the past that led to the birth of anthropology as a discipline. This should be understood by you, and I'm telling you once and again that it will not be required in exam, but you should know about it. That will help you clear your understanding. तो कहीं पे भी आपको डाउट आए तो प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है, एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क। और ये शुरुआत के लेक्चर्स हैं, थ्योरीज है, तो आप में से इंजीनियर्स कितने लोग हैं बीटेक? Okay, so yes, this is the harsh reality of UPSC, that for every engineer UPSC is a hobby now. आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लिख सकते हो कि अपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियर इज अपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो इन दैट केस हमारे 4 साल की जो एजुकेशन है, दैट हैज शेप्ड अवर माइंड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लाइक ये या तो ये चीज एग्जिस्ट करती है या तो नहीं एग्जिस्ट। ओके, एकदम बाइनरीज में हम सोच रहे हैं, बट नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू समथिंग विच इज समवॉट नॉट दैट क्लियर, नॉट दैट ऑब्जेक्टिव। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो सब जगह अप्लाई होगा, बट कुछ ऐसी सोच है जो किसी ने सोची और किसी ने बता दी कि दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में। Okay, so we will be stepping into something, a different kind of thought process, different types of thinking वगैरह, जो आपके लिए थोड़ा सा different होगा, but it will be very interesting. So once you understand theories, the entire anthropology will be a cakewalk for you. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको थ्योरीज को अच्छे तरीके से समझना है, और बीच बीच में थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं, बट डोंट वरी एट ऑल, आई एम देयर, आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं चाहता तो आप लोगों का जो लेक्चर है वो फैमिली मैरिज और किनशिप वगैरह से भी शुरू किया जा सकता है, विच इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंड दैट विल मेक यू रियलाइज दैट एंथ्रोपोलॉजी में कुछ है ही नहीं। बट द प्रॉब्लम इज कि एवरीथिंग विल देन सीम टू लाइक कि आपको रटना है सब कुछ, कि रोट लर्निंग करनी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आपको लग रहा है कि ये सब इजी है, पॉइंटर्स ही हैं। So that's why we are starting with theories, so that you understand whatever anybody has said, उसने किस context में बात कही है, and then everything else will be connected. आपको पूरा anthropology का connection समझ में आ जाएगा, एक एक point whatever we will be reading after theories, I'll be recalling these scholars only. And इन्होंने ये एक general point बोला था, देखो यहाँ पे भी जब इनके point को आप use करोगे, तो that theory becomes valid. Okay, so that's why we will be starting with theory. So let's start with the history. So the birth of anthropology and many other humanitarian discipline is associated with यूरोपियन एनलाइटनमेंट, ठीक है, और द एरा ऑफ रेनेसां। प्लीज डोंट लुक इनटू दिस नोट्स, ठीक है, ये आपको समरी दी गई है, बस आप सुनो मेरी बात, और चाहो तो कुछ रनिंग नोट्स आप बना लो, ठीक है। तो यूरोपियन एनलाइटनमेंट, बट इवन इन द यूरोपियन एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं था कि अचानक से मेंटोस खाए और दिमाग की बत्ती जल गई और सब कुछ हो गया। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज अगेन रिलेटेड टू द पास्ट। सो वी हैव टू गो बैक टू 5th century BC to Greek civilization. You must have heard about this Greek civilization, the era of philosophers, Aristotle, Socrates, Plato. Okay, so Greek civilization actually demonstrated what is called as the classical democratic city state. So what is this? Classical democratic city state, it's not the kind of democracy that we see in the modern era, ऐसा कुछ नहीं है, but a democracy of different kind, wherein there was a monarch, एक king था, और उसका काम ये था कि लोगों को प्लीज करना। You must have seen that movie Gladiator, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कोलोसियम के बारे में दिखाया गया है, और वहां पे किंग होता है, वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराता है, और लोगों की मर्जी से वो डिसाइड करेगा वेदर द जो ओपोनेंट है, जो डिफीट हो गया है, वेदर ही शुड बी किल्ड और वेदर ही शुड बी लेट अलाइव।
So mostly people liked violence and he gave them violence. And उनकी पूरी entertainment हो रही. So that was the kind of democracy that was present there. It was not the kind of democracy that we have that they will be choosing the king. King तो power से ही बनेगा. But he will make sure that the people are appeased. उनका ध्यान कभी भी दुनिया जो स्टेट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उस पे ना पड़े. That's why he kind of please them through this game, sports, freebies, whatever it is. Okay, so in this kind of classical democratic city state, but this was the first time when the people's opinion actually mattered to the rulers. ठीक है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा था, and that's why Greece is said to be the birth or the mother of democracy, republic, and all that ideas that we cherish right now. Greek civilization, 5th century BC. So here, majority of the people, or more than 50% of the population, living in this Greek civilization were slaves. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ग्लैडिएटर मूवी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखो, उसमें आपको काफी कुछ दिखेगा कि बहुत सारे स्लेव्स दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू फाइट एंड उनकी लाइफ की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, दे वर जस्ट ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, मर गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई फ्री सिटीजंस, जो बाकी आधे लोग थे जो फ्री सिटीजंस थे, दे रिगार्डेड द लाइफ ऑफ द स्लेव्स एज डिग्रेडिंग. दीज लाइफ वाज नॉट दैट मींस एज गुड एज ह्यूमन लाइफ, वो मतलब एनिमल्स की तरह माने जाते थे, तो उनका जीना मरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. दे विल बी गिवन ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ फूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. Okay, and in this Greek civilization, the beginning of trade that was intercontinental or between several nations that actually started. Okay, बहुत long distance trade actually started, and this long distance trade brought a lot of wealth, was a source of lot of wealth for the Greek population. बहुत पैसा मिला इनको. अब इस wealth का करेंगे क्या? So what they started to do was they used this wealth to build stadiums, auditoriums, and various other places where people could gather. एंड यहाँ पे कौन लोग गैदर करते थे? वो लोग जो रिच थे, एफ्लुएंट लोग थे, जो ट्रेड से बहुत पैसा कमा चुके थे. एंड व्हेन दे यूज्ड टू गैदर, दे यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट वाज हाउ द फिलॉसफी एक्चुअली स्टार्टेड टू इमर्ज. वो जब मिलेंगे बैठेंगे तो चार बातें होंगी, ठीक है, कि यार ये किंग सही नहीं है, तो किंग सही नहीं है या ये किंगडम सही नहीं है, तो सही क्या होना चाहिए? और आई हैव ऑल द मनी बट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. तो अगर मनी से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है तो फिर किस चीज से हैप्पीनेस मिलेगी? इफ इट इज नॉट मटेरियल हैप्पीनेस, देन व्हाट शुड गिव यू इटर्नल हैप्पीनेस? सो दे स्टार्टेड टू पॉन्डर अपॉन सच काइंड ऑफ questions, and that was the beginning of philosophy. ठीक है, जो modern philosophy जिसको हम लोग कहते हैं, philosophy actually started to emerge due to discussions. And in this time there was a person, you must have heard about his name, Herodotus. Have you heard about his name? So Herodotus was the one, a young man who used to participate, किसी तरीके से sneak in कर जाते थे यहाँ पे, participate in all such kind of discussions. But he was a avid traveler. He wanted to travel a lot. मतलब घुमक्कड़ था वो, उसको घूमने का बहुत शौक था. And that's why due to this kind of hobby he started traveling, he started moving towards the areas जिससे ग्रीस ट्रेड करता है. Okay, उन सब जगहों से जहां से ग्रीस में कुछ सामान आ रहा है, maybe cotton, maybe some kind of spices. So he started exploring those areas from which Greece civilization was trading, was getting some kind of import. Okay, and thereby when he started traveling, and he went to other areas, he came in contact with some other kind of population, some other kind of people. So these other kind of people can be said to be in single quote others. ये अदर एक सब्जेक्टिव आइडिया हो गया कि वो मतलब यहाँ पे वो पॉपुलेशन कुछ अलग थी हमसे या उनसे. ओके, एंड नाउ दिस क्यूरियोसिटी टू नो अदर्स एक्चुअली स्टार्टेड बिगिन टू इमर्ज. आर यू गेटिंग दिस आइडिया किस तरफ हम जा रहे हैं? एक आदमी अपने सोसाइटी को छोड़ के दूसरी सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, एंड देन व्हेन ही एक्सपीरियंसेस देम, व्हेन ही एंटर्स इनटू देयर एरिया, then the curiosity to know them starts to emerge. The curiosity to know others actually began. अब others को इंटरप्रेट कैसे करना है? तो यहाँ पे आइडिया आया, दो टाइप के आइडिया. वन इज यूनिवर्सलिज्म, द अदर आइडिया इज रिलेटिविज्म. ओके, यूनिवर्सलिज्म मीन्स दैट जो अदर्स हैं दे आर लाइक अस, वो हमारे जैसे ही तो हैं, उनके भी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, और वो भी ग्रुप में रहते हैं. दे आल्सो ईट फूड, दे आल्सो मैरी, दे आल्सो मेट विद opposite sex, they have children, they have some similar kind of institutions, families, something like that. So that is universalism. Okay, so they were talking about the similarities or the commonalities between the one group of people and the others. This was the idea of universalism. The second idea that developed, that looked for uniqueness or particularities in the other group. ठीक है, कि बहुत सारी चीजों में वो हमसे सिमिलर तो हैं, बट a lot of ways they are different as well. उनकी फैमिली बहुत अलग तरीके की है, मैरिज बहुत अलग तरीके की है, हमारे यहाँ पे मोनोगेमी है, उनके यहाँ पॉलीगाइनी है, और मे बी देयर कैन बी पॉलीएंड्री. ओके, सो दिस वाज द अदर वे टू लुक एट अदर्स, दैट इज द आइडिया ऑफ रिलेटिविज्म, टू लुक फॉर यूनिकनेस इन देम, टू लुक फॉर समथिंग दैट इज वेरी मच पर्टिकुलर टू देम. ओके, एंड यहाँ पे व्हाट एक्चुअली स्टार्टेड द ग्रीक
जो ट्रेड रूट था, दैट वाज फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म इन ज्योग्राफी, जिब्राल्टर टू प्रेजेंट डे यूक्रेन तक पूरा ग्रीक सिविलाइजेशन की ट्रेड होती थी। And this was a very big area considering the time 5th century BC when there was no motor vehicles or no aeroplanes or ship or something like that. ठीक है, तो उस समय के हिसाब से डिस्टेंस बाय लैंड वाज वेरी बिग एंड द डिफरेंसेस वर आल्सो वेरी स्टार्क, द पॉपुलेशन वाज नॉट दैट डेंस। ठीक है, तो एक एरिया को आप जब क्रॉस करोगे तो देयर विल बी ए लार्ज एरिया व्हिच विल बी अनइनहैबिटेड एंड देन यू विल एंटर इनटू सम अदर एरिया वेयर द पीपल एंड देयर कल्चर विल बी वेरी मच डिफरेंट। ओके, एंड हियर द ग्रीक्स व्हेन दे एनकाउंटर्ड और दे स्टार्टेड टू एनकाउंटर सम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ये जो ट्रेड रूट पे खास करके इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते थे कि जब ये लोग सामान लेके आ रहे हैं, कुछ स्पाइसेस लेके आ रहे हैं, कॉटन्स लेके आ रहे हैं, तो दे यूज्ड टू कॉल दीस पीपल्स एज बारबेरियंस। नाउ दीज आर द जंगल में रहने वाले लोग थे जो गुरिल्ला अटैक वगैरह करते थे। और बारबेरियंस नाम क्यों था? तो द कॉमन नोशन गोज लाइक somebody has written, like Herodotus has written, that they were called barbarians because whatever they said seemed to the Greeks like they're saying bar 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 bar, something similar to this word, they were repeating it, and that's why the one who speak this kind of language like speaking bar 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 bar, so they were labeled as barbarians. So the ones who were living in jungles थोड़े old yet animalistic type के थे, and their language was intelligible to the unintelligible to the Greeks, and that's why they were labeled as barbar barbarians. Okay, हो सकता है शायद पंजाबी रहे हो तो इसलिए बार बार वो पूछ रहे हो कि यहाँ पे बार कौन सा है, तो मे बी दैट्स व्हाई बारबेरियंस बोल दिया गया हो। So this was the basic beginning, labeling the others. Now then came a scholar, Aristotle. So here Aristotle is said to be the official father of anthropology. Actually modern anthropology के 4 founding fathers हैं, but ancient anthropology के एक ही founding father है, that is Aristotle. He was the one who coined this term anthropology, saying that anthropology is nothing but gossip of human about itself. The man is gossiping about himself. Okay, and here he says that humans have a lot of needs that are very much common to animals. Animals जैसे ही needs है हमारी भी. We also need food, we also need mate, we also need space. That we have seen in orientation. I have told you कि हम लोग भी बाकी species की तरह survive ही करना चाहते हैं. But one thing that we have in extra is culture. Okay, rest of the animals do not have cultures. They only have the biological power. But they ultimately are looking for food. They ultimately are looking for mate. They are ultimately looking for space. And we are also doing the same kind of thing to survive. In the same way, he says that humans also have same kind of needs just like animals. But we have something more than animals. And that what more is with us is rationality, wisdom, and morality. This is something we have in extra from other animals. ठीक है, तो here this idea कि बाकी मीन्स यहाँ पे रिलेटिविस्टिक आइडिया शुरू हो गए, दैट इज बाकी लोगों की रैशनैलिटी कैसी है, क्या सबकी रैशनैलिटी सेम है, इज एवरीबडी थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, एवरीबडी हैज द सेम अमाउंट ऑफ विजडम, डू एवरीबडी हैज सेम मॉरल वैल्यूज। ओके, हमारे मॉरल वैल्यूज फॉर एग्जांपल आप में से कितने वेजिटेरियन? ओके, तो यू फील लाइक किलिंग एनिमल्स इज अ सिन, बट रेस्ट ऑफ यू हु कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड यू फील लाइक कि ठीक है दीज एनिमल्स आर मेंट टू बी कंज्यूम्ड, चिकन वगैरह आप खा रहे हो तो यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ गिल्ट और यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सिन। So different moral values. So this was the question that began, whether rationality, whether wisdom, whether morality is same or is it different. If you remember the two approaches, universalistic or relativistic, the one which was looking for commonalities, the other which highlighted the specific or differences or uniqueness. Okay, now after this Aristotle, Plato, Socrates, they were the one who were talking about human nature, how human thinks, how human perceives things, morality कैसी होनी चाहिए, whether it should be universal or it should be specific, whatever it is. Then came the era of Alexander. ठीक है, अलेक्जेंडर आप लोगों ने सुना होगा कि वो ओल्ड वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला पहला किंग था, एंड ही वाज नॉट एबल टू कॉन्कर इंडिया, दैट वाज द ओनली नेशन लेफ्ट, नहीं तो वो पूरा का पूरा ओल्ड वर्ल्ड दैट इज एंटायर मिडिल ईस्ट एंड द यूरोप वो कैप्चर कर चुका था। ठीक है, तो ही वाज द वन हु वाज द फर्स्ट किंग टू रूल द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर वर्ल्ड का मतलब आई एम सेइंग दैट द वंस जहां पे लोग रहते थे। ओके, सो हियर अलेक्जेंडर का रूल होता है, and he basically started spreading the culture to which he belonged, Greek culture, to the rest of the world, means the areas which were not yet exposed to Greek culture, now they have come under single kingdom. Okay, and that's why they were following the similar kind of laws, similar kind of values, and he will then start spreading the Greek culture. Now later on what happens, Roman Empire starts, the birth of, you must have heard about this, Roman Empire. एंड ये अलेक्जेंडर के फॉल के बाद रोमन एम्पायर शुरू हो जाता है, एंड हियर वन थिंग दैट हैपेंस इज स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका रीजन क्या है। ओके, सो द बर्थ ऑफ रोमन एम्पायर एंड स्प्रेड ऑफ रोमन एम्पायर, एंड विथ रोमन एम्पायर स्प्रेड ऑफ Christianity. The Christianity became the state religion in almost all the states that were ruled by Roman Empire. Christian religion काफी ज्यादा स्प्रेड होता है। अब religion जब स्प्रेड होता है तो आप समझो कि बहुत सारी वैल्यूज सिमिलर हो जाएंगी। You belong to one religion, स्पेशली इब्राहिमिक रिलीजन के कुछ बेसिक वैल्यूज हैं, जो इब्राहिमिक रिलीजन दैट मींस ज्यूज, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ओके, दैट हैव देयर ओरिजिन इन पैलेस्टीन।
ठीक है, तो ये अब्राहमिक रिलीजन है जो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं एंड दे हैव ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो हिंदुइज्म में बहुत सारी मल्टीपल फिलॉसफीज हैं, यू मस्ट हैव रेड दिस इन आर्ट एंड कल्चर, या आप लोग पढ़ोगे भी, बट अब्राहमिक रिलीजन बहुत ही ज्यादा रिजिड रिलीजन है एंड दैट इज व्हाई this spread of Christianity led to spread of similar kind of values across multiple nations. I'm not saying countries, I'm saying nations. You will understand the difference of nation and countries later on. But this Christianity spread hoti hai, and approximately in 4th century AD, this Roman Empire falls down. And what happens is the birth of several smaller ethnic groups across Europe, like Slavic, Celtic, Germans. You must have heard these Celt and Slavic and all. They were the one who participate. जिसके basis पे बहुत सारे nations बने, like Austria, Hungary, okay, Bosnia, and then Russia, and then Germans. इस तरीके से, और ये they were the ones जो basically इनके बीच का जो conflict था, that was the reason for rise of World War I. Okay, तो ऐसे कई सारे smaller groups started to emerge after the fall of Roman Empire. Now, there was not a single kingdom that was uniting all these European smaller nations, but there was still one thing that united all these smaller groups. That is Christianity. Okay, they were still connected by Christianity. Okay, and here what actually happened was the priests across these groups, they used to maintain the contact with each other. और वो कैसे? एक central authority was established, that is the Pope, Vatican City. अब वहां पे people will come, they will gather, they will talk. तो आप irrespective of आप जर्मन से हो, जर्मनी से हो, या फ्रांस से हो, या ऑस्ट्रिया से हो, या किसी भी देश से हो, okay, you will be paying your heed or you will be obliging to the authority of the Pope. He is the head of Christianity. ठीक है, अब आपके nations war में है, doesn't matter, but one thing that united each of these nations was Christianity. They used, and now you will understand that no matter whosoever ruled that nation, ultimately it was controlled by, or it should have to be accepted by the church. जैसे कि इंडिया में होता था कि जब भी कोई राजा कोई राज्य को क्लेम करता था, he claimed some kind of kingdom, he has to be crowned by some पुरोहित. जब तक कोई पुरोहित उसको क्राउनिंग नहीं करेगा, उसका राज्य अभिषेक नहीं करेगा, तब तक उसको राजा की पोजीशन नहीं मिल सकती. He can never take it. And you must have heard about the story of महाराज शिवाजी. ठीक है, तो शिवाजी was a peasant actually. वो peasant community को unite करके मराठास को he basically overthrow the Mughals. लेकिन शिवाजी को कोई राजा मानने को तैयार नहीं था, कोई क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं था. And that's why his crowning has to take, like it was delayed by 3 to 4 years. He has to bring a priest from Banaras ताकि वो उनका राज्य अभिषेक कर सके, वो उनको क्षत्रिय माने, and then his actual rule started. So this was the similar kind of thing that started to happen in Europe. That no matter whosoever rules, it has to be recognized by the church. So no matter what king कोई भी होगा, उसको चर्च की अथॉरिटी को मानना ही होगा. So church became a parallel power there. The one who controls economy, the one who controls science, knowledge, everything, who dominates the worldview. So here the knowledge that became the you can say under the or the handmaiden of church. वो चर्च कंट्रोल कर रहा है, जो भी नॉलेज है, जो भी आइडियाज हैं, वो चर्च के हाथ में आ गए. एंड बाइबल बिकेम द एनसाइक्लोपीडिया. बाइबल बिकेम द ट्रू फाउंटेन ऑफ नॉलेज. जो बाइबल में लिखा है वही सच होगा. एंड यहां से एक आइडिया आता है सोसाइटी का, दैट इज दैट सोसाइटी इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन. ठीक है, सोसाइटी इज ऑफ divine origin, that is God created this society. We have the way what we are, we have been created by God like this. It's the God that has created us, and we have the society that we live in, the values that we follow. This has been some kind of manual book that has been written by God for us, that we have to take it on the face of it. It's not the human beings that have created it, but it's of divine origin. ये भगवान ने बनाया है हमारे लिए. Okay, so we have to follow it, and we have retained it. So this was how we proceeded towards the Middle Ages. यहाँ पे क्लियर है कि कैसे धीरे धीरे चर्च ने अपने कंट्रोल में सब कुछ लिया और वहां पे बोला कि बाइबल इज द सोर्स ऑफ और फाउंटेन ऑफ ऑल द नॉलेज. एंड जो भी हम हैं, वी हैव नॉट इवॉल्व्ड लाइक दिस. इट्स द सोसाइटी वाज क्रिएटेड एज सच बाय द गॉड. और उस सोसाइटी में जिस तरीके से हमको बिहेव करना है, वो सब भी हमें भगवान ने ऐसे बना के भेजा है. लैंग्वेज, फैमिली, मैरिज, व्हाटएवर इट इज, वाज क्रिएटेड बाय गॉड. So this is how the church became the most powerful institution, or religion became the most powerful institution throughout the medieval ages. But then we come to straightforward jump करते हैं to the era of European Enlightenment. That is the era of Renaissance. Renaissance, that is 15th century approximately. ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? 15th century में ऐसा क्या हुआ कि कुछ अलग होने लग जाएगा? So you must have heard the name of Henry the Navigator. ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा. Who was the first one to circumnavigate the world? Circumnavigation of the world, Henry the Navigator. And then Columbus, जिनको बोला गया कि आप basically find a sea route to India, because land route पे attacks बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इंडिया से ट्रेड करना was difficult. And India से trade was so much important, or so much the route for prosperity, that every country in Europe wanted to trade with India. That's why when we started to develop technology and all that stuff, so he was sent by the kingdoms to find the route to India, sea route to India. But instead coming to India, he landed at American land पे वो land करते हैं. And thereby he says that ठीक है, मेरे को तो इंडिया मिल गया. And that's why जो American tribes and they are called as American Indians. Okay, just because he misconceived America as India. But यहाँ पे
व्हेन ही एंटर्ड इनटू अमेरिका ही एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ अदर पीपल्स जो कि यूरोप से बहुत डिफरेंट in their dressings, in their language, in their way of life, which was not at all comparable to European people or European way of life. तो यहाँ पे several other navigators they started their journey जैसे वास्को डी गामा और बहुत सारे और navigators हैं who were using sea route to explore different lands. And what this was the time when in Europe printing press actually also was started. ठीक है, तो अब जब ये लोग जाने लगे दूसरे दूसरे लैंड्स पे दूसरे दूसरे आइलैंड्स पे एंड वहाँ के लोगों से मिलने लगे तो दे स्टार्टेड टू राइट देयर ट्रैवलॉग्स अपने जो अभी हम लोग जो वीडियो वीलॉग्स बनाते हैं वैसे वो ट्रैवलॉग्स रिटन रिकॉर्ड्स और डायरीज वगैरह लिखते थे कि हमने क्या देखा। अब वो डायरीज देखो आप आपने कोई वॉयेज की है सपोज करो कि इफ यू गो टू स्विट्जरलैंड और से यू गो टू से सम अदर प्लेस सेशेल्स या कोई समोआ में जाते हो वेकेशन के लिए एंड यू कम टू एंड यू आर फ्रॉम अ विलेज यू कम बैक टू योर विलेज एंड यू आर सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल कि भाई क्या देखा ओके एंड देन यू स्टार्ट नरेटिंग कि यार वो लोग हमारे जैसे ही हैं सेम ही तो बात करते हैं और मतलब फैमिली वैमिली ऐसी ही है बस वहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा कम है बढ़िया लगा माहौल अच्छा था 10 मिनट में सब उठ के चले जाएंगे ओके बट इफ यू वांट टू बाइंड देम यू वांट टू गेन देयर अट्रैक्शन तो व्हाट यू विल डू अरे तुम्हें पता है वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं अरे अच्छा ऐसा करते हैं so you will be telling them some sensational things okay in order to bind their attraction in order to glue them towards you attract them and then only they will be surprised they will be curious अरे भाई क्या क्या देखा है वो आपसे सुनेंगे आपकी बुक को भी पढ़ेंगे and that's why intentionally these voyagers they started writing something which was not correct or which was full of errors and prejudices so anybody whom they saw naked they thought that कि वो animal है क्योंकि humans are by default decide they born with the clothes और अगर कोई नेकेड घूम रहा है तो वो एनिमल है या फिर वो अनसिविलाइज्ड है एंड देन बाकी चीजें दे स्टार्टेड अज्यूमिंग बाय देमसेल्फ कि वो एनिमल है तो वो कच्चा मांस भी खाता होगा या फिर वो कैनिबल भी होगा या फिर प्रोमिस्कुअस भी होगा प्रोमिस्कुअस मींस उनमें सेक्सुअल मोरालिटी नहीं होगी दे कैन हैव सेक्स विद एनीवन ओके बी इट देयर सिस्टर्स ब्रदर्स नो वन so no sexual morality and they can have multiple sexual partners at the same time they don't have any kind of laws they don't have any kind of morality they don't have any kind of religion they don't have any kind of political system and at the same time इससे एक आदमी को और फायदा हो रहा था एक इंस्टीट्यूशन को और फायदा हो रहा था कैन यू थिंक अबाउट इट इस आइडिया से किसको फायदा होगा not the churches but the one who were funding these voyages that is the political institution because this gave them or this helped them project that these are the areas जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है and they can justify the colonization of these areas okay यहाँ पे तो अब हम गवर्न करेंगे इनको ठीक है तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन को एक जस्टिफिकेशन मिलने लगा कि ठीक है अब हम इनके साथ तो यहाँ के लोग हैं ये लोग बैकवर्ड हैं ये लोग स्लेव्स के लिए ही बने मैनुअल लेबर के लिए बने इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है लीडरशिप की ओके so this is how the era of colonization actually began तो ये तो थोड़ा डार्क फेज था डार्क ट्रूथ है about the enlightenment but one thing good also happened that the authority of church started to be or got to be challenged कैसे कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया लेकिन बाइबल में अमेरिका के बारे में कोई बात ही नहीं लिखी क्यों बाइबल वाज रिटन कीपिंग मिडिल ईस्ट इन द माइंड एंड वहां पे आसपास के लैंड जो उस समय तक लोगों के नॉलेज में थे वो लिखे गए अब ऐसे कई सारे और आइलैंड्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दैट स्टार्टेड टू बी डिस्कवर्ड व्हिच वर नॉट मेंशन्ड इन बाइबल so that started the challenge towards the authority of church okay plus अब एक क्वेश्चन और आया कि ये लोग इतने ज्यादा डिफरेंट हैं तो इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन कैसे करें इफ दीज आर ह्यूमंस ओनली एंड ये हमसे इतने ज्यादा डिफरेंट हैं तो हाउ टू एक्सप्लेन दीज डिफरेंसेस क्योंकि बाइबल ने तो ये कहा था दैट भगवान ने सबको बनाया है ये पूरी सोसाइटी भगवान ने क्रिएट की है एंड इट हैज गिवन अस ए मैनुअल कोड ऑफ कंडक्ट जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी वे ऑफ लाइफ हमारी डिसाइड होगी बट नाउ वी आर फाइंडिंग समथिंग कंप्लीटली अ डिफरेंट सोसाइटी एंड दिस डिफरेंट सोसाइटी तो ये डिफरेंस है क्या सो इन दिस द आइडिया ऑफ अदर्स वापस आता है टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ अदर्स तो व्हाट द यहां पे अदर्स को समझने के लिए एक आइडिया और लगा दैट इज दे यूज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस मतलब दैट विथ टाइम वी हैव डेवलप्ड और वी हैव प्रोग्रेस ओके टाइम के साथ हम लोग डेवलप हुए हैं या प्रोग्रेस हुए तो दैट मीन्स ये लोग कौन है ये शायद हमारा पास्ट है ओके so the spatial difference was now perceived as the temporal differences just understand the meaning of this sentence spatial means geographical differences लेकिन temporal differences means differences with time तो हम spatial difference को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे कि शायद जो प्री कंसीव्ड जो पुरानी सोसाइटीज हैं जो सिंपल सोसाइटीज हैं जो हम लोगों ने अमेरिका में देखी या अफ्रीका में देख रहे हैं वो शायद यूरोप का पास्ट है और शायद यूरोप भी एक टाइम पे ऐसा ही रहा होगा और बाद में वो इवॉल्व हो गया ओके so this idea of evolution actually was a challenge to the authority of church which believed in the idea of creationism evolution क्या बोलता है कि हम इवॉल्व हुए स्टेजेस में ठीक है और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते गए
बट क्रिएशनिज्म क्या कहता है कि गॉड ने हमें ऐसे ही क्रिएट कर दिया, हम जैसे हैं, द सोसाइटी वाज क्रिएटेड एज इट इज बाय गॉड एंड द वे वी बिहेव हैज बीन टोल्ड टू अस कि ऐसे ही आपको बिहेव करना है, कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग को दे दिया गया। So this idea of evolution was actually challenge to the idea of church, and उसमें सबसे basic idea था, that is the idea of development and progress. Is it clear? इसमें कोई doubt है? So here what actually happened when the European people they started to understand the others, खास करके Americans, Native Americans and Native South Americans. So this is how they interpreted them, that they were a mirror reflection of them from the past. And लेकिन अभी भी वो others को उनके behalf पे नहीं, others were just playing a passive role for Europeans to understand their past. वो others को नहीं जानना चाहते थे, वो others को इसलिए देख रहे थे कि उससे ये पता चल जाए कि हम पास्ट में कैसे थे, not as how others are in the present. So still anthropology as a discipline did not actually officially has started, but now we have started our curiosity to understand our past has actually developed there, कि हम पास्ट में कैसे थे, जो सिविलाइजेशन वाले लोग हैं हम पास्ट में ऐसे रहे होंगे, तो ये लोग जो है ये हमारा पास्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड हियर बाय two types of ideas or two types of approaches to understand others actually started. One is the approach of empiricist or empiricism, and the other is the approach of rationalist or rationalism. ठीक है, अब देखो रेनेसां जो पीरियड था, दैट वाज व्हेन द आइडियोलॉजीज ऑफ चर्च गॉट चैलेंज्ड। चर्च को हमने डिनाउंस करना शुरू किया कि हर चीज के लिए हमें रीजन चाहिए था, इट वाज द एरा ऑफ रीजन, कि हम कोई भी चीज को ऑन द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, we want reasons for it, and this era of reason actually led to what is called as the trending science, कि साइंस को हम एक्सेप्ट करने लगे, रिलीजन को रिप्लेस करता है क्या, साइंस, क्योंकि वो हर फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगा, एंड व्हेन दैट फिनोमेना विल बी एक्सप्लेन देन ओनली वी विल बी accepting it. And you must have heard कि Galileo, Copernicus, this era witnessed the birth of these kind of scientists जो basically planetary motions और इन सब चीजों को स्टडी कर रहे थे और वो उनको रीजंस बता रहे थे, एंड इनिशियली दे वर चार्ज विद द allegations of blasphemy, कि वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, Galileo, Copernicus has very bad fate, उनको पनिश किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया by the church because they were challenging the authority of church. But gradually this actually we were moving back to the same time of the Greeks wherein people used to gather and they started again to discuss things. And now इसका culmination कैसा होगा with French Revolution wherein and American Revolution wherein the idea of free world, free mind, free individuals will come up and idea of liberty, equality, fraternity will come up. तो चर्च डोमिनेट नहीं कर सकता, मोनार्क डोमिनेट नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, ब्रदरहुड विल कम अप, लिबर्टी विल कम अप, लिबर्टी टू थिंक विल कम अप, बट इट विल ऑल कम व्हेन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके, और ओवरकम. तो यहाँ पे two ideas actually came. First one is empiricists who started to say that कि when you see this world, anything that our sense can perceive, ठीक है, कोई भी हमारी जो सेंस, कोई भी चीज जो हमारी सेंस देख सकती है या हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स फील कर सकते हैं, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड उसकी कोई साइंस होगी. Are you getting this idea? Anything that can be perceived by our sensual apparatus is objective or is the object of study, and since it's the object of study, it will have a science of its own. तो यहां से आया सोसाइटी, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम रोज सोसाइटी को देख रहे हैं, isn't it? So that means society is an object of study, and since society is an object of study, it will definitely have some laws of its own, just like physics. फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट्स ऐसे रैंडमली मूव नहीं करते, आप उनके लॉज से उनके मोशन को डिफाइन कर सकते हो, यू कैन प्रेडिक्ट इट, नथिंग इज यू कैन से रैंडम, एवरीथिंग इज पैटर्न्ड, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय सम नेचुरल लॉज, एंड उन नेचुरल लॉज की स्टडी को हम लोगों ने कहा नेचुरल साइंसेस. ओके, तो अभी ये एरा ऑफ साइंस है, तो हर कोई चाहता था कि अगर हम किसी चीज के बारे में बात करें उसे एक्सेप्टेबिलिटी तभी है जब वो साइंटिफिक होगा. तो देन दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी आल्सो, एंड दे सेड कि सोसाइटी को भी तभी, सोसाइटी के बारे में जो भी हम बोलेंगे वो तभी वैलिड है जब वो साइंटिफिक, और साइंटिफिक है का मतलब यू शुड हैव laws. So this is what empiricists said. That if you want, you can write this empiricists assume that sensory apparatus of the body was only source of valid knowledge about the external world, was only source of valid knowledge about the external world. ठीक है, was only source of valid knowledge about the external world, was only source of valid knowledge about the external world.
एंड एक एम्पेरिसिस्ट का नाम आपने सुना होगा, जॉन लॉक। लॉक, हॉब्स एंड रूसो, आप लोगों ने ये नाम तो सुने होंगे बचपन में या अभी भी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस। तो लॉक गेव द आइडिया ऑफ टेबुला रासा, दैट इज द आइडिया ऑफ ब्लैंक स्लेट। इसके ऊपर एक हिंदी मूवी है, कोरा कागज। तो दैट इज व्हाट टेबुला रासा इज, दैट सेज दैट कि जो ह्यूमन माइंड है, इट्स लाइक ब्लैंक स्लेट, ठीक है, एक कोरा कागज है। और आप जिस तरीके से उस कोरे कागज पे लिखोगे, ब्लैंक स्लेट पे लिखोगे, वो माइंड वैसे ही फंक्शन करेगा, एंड दैट विल डिफाइन आवर बिहेवियर। इट्स लाइक जस्ट एक कंप्यूटर है विद एम्प्टी मेमोरी। अब आप उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे, वो कंप्यूटर वैसे बिहेव करने लग जाएगा। आपने लाइनेक्स डाला, यूनिक्स डाला, विंडोज डाला, मैकिंटोश डाला, द वे व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू पुट इनटू इट, इट विल बिहेव अकॉर्डिंगली। ओवरऑल कंप्यूटर वही है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट, एंड दैट इज डिसाइडिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ ह्यूमंस। इन द सेम वे, वैसे कि अब आप पंजाबी कल्चर में पैदा हो जाओ, इंसान सेम है, बट वो पंजाबियों की तरह बिहेव करने लग जाएगा। बट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस एक आदमी कोई यूपी का हो और उसको सऊदी में ग्रो अप कराया जाए, तो सऊदी कल्चर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और मे बी इजराइल में ग्रो कराया जाए तो वो इजरायली कल्चर के हिसाब से। और अमेरिका में आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ बच्चे जो अमेरिका में इंडियन अमेरिकन हैं, उनके एक्सेंट और उनका कल्चर, उनका वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग, वो फिजिकली इंडियन है बट इंटरनली और मेंटली सोशली दे आर ऑल अमेरिकन। Okay, their thinking, their way of life, their speaking, accents, whatever it is complete. So it's like कि internal software में ही difference है. So this is what empiricist John Locke said कि human mind is less like tabula rasa. It's like a blank slate. When we are born with a blank slate. कुछ भी internal नहीं है, कुछ भी innate नहीं है. Now whatever we are doing, everything is based on our socialization. Whatever kind of socialization we are being fed, जो भी operating system डाला जाता है हम उस तरीके से behave करने लग जाते हैं. Okay, so this is empiricist. They are saying कि laws हैं, सोसाइटी को भी समझने के लॉज हैं, सोसाइटी के भी पैटर्न्स हैं, नथिंग इज रैंडम। सोसाइटी को समझने वाली साइंस भी होगी, दैट इज सोशल साइंसेस, एंड दैट्स व्हाई सोशल साइंसेस कहा जाता है। ओके, यू मस्ट हैव सीन लाइक 7th 8th 9th 10th में सोशल साइंसेस जब शुरू होती, तो इट्स नॉट सेड दैट कि सोशल है तो इतना एब्रप्ट है, इतना सब्जेक्टिव है, तो फिर इसको साइंस क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट हैज इट्स बर्थ इन द रेनेसां पीरियड, जहां पे साइंस की वैलिडिटी थी, रिलीजन को काउंटर किया गया था, एंड फॉर एनीथिंग टू बी एक्सेप्टेड, टू बी कंसीडर्ड वैलिड, इट हैज टू बी साइंटिफिक इन नेचर, तभी उसको माना जाएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस एम्पिरिसिस्ट एक्चुअली सेड कि हर चीज जो भी आप परसीव कर सकते हो अपने सेंसरी अपैरेटस से, उसके कुछ लॉज होंगे, और सेंसरी अपैरेटस आर द ओनली सोर्स ऑफ द वैलिड नॉलेज। ओके, सो हियर दिस एक्चुअली लेड टू द बर्थ ऑफ एन अप्रोच दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म। ये हम लोग दोबारा वापस देखेंगे व्हेन वी विल बी कवरिंग यूनिट 8 रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज इन एंथ्रोपोलॉजी। तो दैट इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिस्ट अप्रोच। अब पॉजिटिविज्म जो स्कॉलर्स आए इनिशियली, जो एम्पिरिसिस्ट को मानते थे, तो दे स्टार्टेड फाइंडिंग दीज लॉज जो कि यूनिवर्सली वैलिड होंगे सारी सोसाइटी। क्योंकि अब ऐसा है ना कि फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन आप अमेरिका में लॉ ऑफ मोशन देख रहे हो, या फिर इंडिया में देख रहे हो, और या मून में देख रहे हो, या सन पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, इट विल बी सेम। इन द सेम वे, these positivist scholars, they started to find these laws which will be universally acceptable to all the societies or applicable to all the societies, to all the culture. ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज लेके आएंगे, कुछ लॉज लेके आएंगे that will be universally acceptable. ठीक है, but then there came a group of scholars who were rationalists, who discarded senses, who said that कि sense is not the source of valid knowledge. sense के beyond भी एक वर्ल्ड है जो शायद आप परसीव नहीं कर सकते, but that exists. ओके, जिसमें एक बहुत फेमस स्कॉलर है डिस्कार्ट्स, रेने डिस्कार्ट्स, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, और उनका एक बहुत फेमस कोट है दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम। नहीं सुना तो अब सुन लोगे बहुत बार। और तो ही वाज द वन हु सेज कि सेंसरी नॉलेज कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ केस, और एक सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी बहुत दो लोगों के लिए बहुत अलग-अलग है। लेट्स सी, आपको आप ओआरएन में रह रहे हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप लोग पीजी देखने गए, और जितनी बड़ी ये क्लासरूम है, आपको एक रूम मिल जाए, से 2000 रुपीस पर मंथ के रेंट, इमेजिन, ठीक है, इतना बड़ा रूम, एंड यू विल बी लाइक, और वो बोले 10 इयर्स की लीज पे आपको 2000 पे दे रहे हैं, यू विल बी लाइक कि भाई साहब ये तो बढ़िया है, मेरे को तो 30 साल की लीज कर दे, कोई ना कोई तो रह ही लेगा। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी, इतना बड़ा रूम, इट्स लाइक फीलिंग ऑफ लग्जरी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगी आप इतने बड़े रूम को देख के, राइट? क्योंकि आप इतने बड़े रूम इज लाइक इतना अभी जिस टाइप के रूम मिलते हैं 25-25 हजार में, आप दोनों हाथ से दोनों दीवार टच कर सकते हो, ठीक है, इतने बड़े रूम है वहाँ पे फॉरेन में, एंड इतना बड़ा रूम आपको मिल जाएगा, तो दैट विल ब्रिंग यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेम रूम। बट इमेजिन अ ट्राइबल हु हैज बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस, एंड नाउ उसको ट्राइबल लैंड को ले लिया गया, फॉरेस्ट लैंड को ले लिया गया उससे, बोला कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई डैम बनेगा, एंड उसको इसी क्लासरूम में लाके रख देगा कि ये तेरा घर होगा, अब परमानेंटली तेरा है। यू विल फील आई एम ट्रैप्ड इनसाइड दीज फोर वॉल्स। इससे पहले आई वाज इन द फॉरेस्ट बीनीथ द स्काई, एंड जहां तक मेरी नजर जाती थी वो सब मेरा था। ओके, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड्स और एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट, बट वो सब मेरा था, कोई प्राइवेट ओनरशिप का आइडिया ही नहीं था, वहां पूरा फॉरेस्ट मेरा था, आई वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड नाउ आई हैव बीन ट्रैप्ड इनटू दीज फोर वॉल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बट परसेप्शन बहुत अलग है, दो अलग अलग लोगों को।
तो दैट मीन्स जब रियलिटी ही सेम नहीं है तो लॉ कैसे सेम हो जाएगा? आर यू गेटिंग दिस? व्हेन दिस ऑब्जेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सेम, हाउ कैन सेम लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू इट? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? और से एक और अच्छा एग्जांपल है, व्हाट इज दिस फॉर यू? कॉस्टिक, बट इमेजिन एन अमेरिकन सीइंग इट, इसे ये तो हिटलर नाजी पार्टी का सिंबल है, इजंट इट? तो अगर आप इसको ऐसे अमेरिका में जाके अपनी गाड़ी के आगे ये लगा के जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, एक नई गाड़ी लेते हैं उसके आगे स्वास्तिक लगाते हैं, ओके, और 2-4 दिन तो लगा ही रहता है, हम कभी उसको धुलते नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप वॉश ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ही हम गाड़ी की वॉश कराते हैं। और आप उसको ये करके अगर अपनी गाड़ी में लेके चलो, तो हो सकता है कुछ अमेरिकन अटैक कर दे कि ये ज्यूज नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला आदमी है। सी द सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी बट परसेप्शन इज डिफरेंट, so that means even the senses can perceive this differently। ऑब्जेक्ट तो यही है पर इसको परसीव करने का तरीका दोनों का बहुत अलग अलग। आर यू गेटिंग दिस? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज? ओके, so that means कोई एक कॉमन लॉ जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो कैन नॉट बी मेड, ओके, एंड दैट लेड टू द बर्थ ऑफ ए न्यू अप्रोच, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिविज्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस नो कुछ तो बोलो यार। ओके, तो ये दो अप्रोचेस आई समझने की कि एक्सटर्नल रियलिटी को हम कैसे परसीव करेंगे। ओके, दैट इज वन इज द एम्पिरिसिस्ट, दैट इज द सेंसेस बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल द वैलिड नॉलेज, एंड इसके बेसिस पे व्हेन सेंसेस कैन परसीव ऑल द, जो चीज हम परसीव कर सकते हैं वही सच है, तो देन देयर शुड बी सम लॉज फॉर इट, एंड दैट लेड टू द बर्थ ऑफ पॉजिटिविज्म। लेकिन बाद में बोला गया कि जो चीज हम परसीव कर सकते हैं वो अलग, सबका सच अलग अलग है, मेरा सच अलग है, आपका सच अलग है, और हर किसी का अपने सच है, अपनी रियलिटी। ओके, एंड दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। जब कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही नहीं है तो उसका सच कैसे बताओगे और उसके लॉज कैसे बताओगे? देयर हैज टू बी समथिंग ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, द बॉल, अगर मैं बॉल को छोड़ता हूं तो बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट राइजेस अप, ठीक है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस, ठीक है, तो आप बताओगे कि एक फोर्स से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा एंड देयर विल बी रिएक्शन टू इट एंड इट विल राइज, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे, और या फिर ग्रेविटी बेसिकली इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स द ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन। तो एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बट इन दिस केस फॉर एग्जांपल इन सोसाइटी, इन कल्चर्स, इन सिंबल्स, अगर कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं, मेरी आप सबकी अलग अलग रियलिटी है, तो एक कोई लॉ भी नहीं हो सकता जो इन सबको बता सके। फॉर ए लॉ टू एग्जिस्ट देयर हैज टू बी अ कॉमन फिनोमेना दैट शुड बी यूनिवर्सली सेम, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन दैट केस देयर कैन नॉट बी ए सिंगल लॉ, देयर कैन बी, इट इज ऑल सब्जेक्टिव, देयर कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिविटी इन इट। तो यहाँ पे एक डिबेट आ गई कि वेदर एंथ्रोपोलॉजी, या फिर फॉर इन दैट केस फॉर ऑल द ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी साइंस है या नहीं है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी को साइंस बोलते हैं, तो दे विल बी द वन हु विल बी पॉजिटिविस्ट, विल से कि senses are the source of all the valid knowledge, they can perceive the objective reality, and when this objective reality, there exists some objective reality, there has to be some laws for it, and that is why the laws which studies this objective reality will be, या फिर जो भी discipline which studies these kind of laws or which develops these laws is anthropology। so anthropology is the science of culture for positivists or science of ways of life of the people, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि साइंस होगी, बट दे विल से कि जब ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही नहीं है, कोई लॉ भी नहीं हो सकते, और कोई लॉ नहीं है तो वो साइंस नहीं, एंड दैट इज व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट अ साइंस बट इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन, इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव इन नेचर। So these are something जो मैं आपको ये कॉमन थ्रेड्स हैं जो हम लोग थ्रू आउट पेपर 1 में कवर करते जाएंगे, बट दिस इज हाउ द हिस्ट्री एक्चुअली, और दिस इज हाउ हिस्टोरिकली दिस डिसिप्लिन स्टार्टेड टू इवॉल्व। सो द स्टोरी दैट यू हैव बीन गिवन आपके नोट्स में, जो एक छोटा सा नोट्स है 2 पेज का, दैट एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली, आप सेकंड पेज में देखिए, ये तो थ्योरीज का है, उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोडक्शन लिखा होगा जिसमें एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। व्हाई आई एम राइटिंग ह्यूमन, इट्स बिकॉज़ इनिशियली इट वाज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ मैन, एंड व्हेन आई एम सेइंग स्टडी ऑफ मैन, तो दिस मैन वर्ड इज नॉट ऑल इंक्लूसिव, माइंड इट। स्टडी ऑफ मैन का मतलब man, the male, okay, why? Because almost all the disciplines that originated in this renaissance era, they were androcentric in nature, that is male dominant। चाहे वो कई सारी, आपने फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने जानते हो, फादर ऑफ मैथमेटिक्स जानते हो, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 4 फाउंडिंग फादर्स, टाइलर, मॉर्गन, बोआ एंड डर्कहाइम, ठीक है, एंड अरिस्टोटल। सोशियोलॉजी के फादर हैं, ठीक है, कॉम्टे, देन साइकोलॉजी के फादर है सिगमंड फ्रॉइड। हैव यू हर्ड मदर ऑफ एनी ऑफ दिस डिसिप्लिन? कभी सोचा भी आपने कि यार बाप तो है, माँ के बगैर कैसे पैदा हो गए? व्हाई? Have you ever pondered कि why these discipline never had a mother, only fathers? The reason was that these discipline were born in the era that was completely patriarchal, and that is why these discipline were completely androcentric. And when I'm saying that anthropology is androcentric,
तो व्हेन इट वांटेड टू स्टडी ह्यूमन, तो ह्यूमन में भी इन लोगों ने काइंड ऑफ एम्फेसिस किया ऑन मैन ओनली, not women, because women were still considered closer to nature or animals compared to man. Man were the one who made culture over interacting with culture. Okay, like politics में man, economics में man, religion dominated by man, and these all are the institutions that were made by the culture, or these are cultural institutions, and इन सब को dominate कौन कर रहा था? Man. And that is why these were endocentric and completely initially anthropology के अंदर भी या फिर sociology या इन सब humanitarian disciplines में आपको male domination देखने को मिलेगा. और ऑल्सो इन साइंस ऑल्सो, फिजिक्स में भी फादर्स होंगे बट कोई मदर नहीं है, बायो में भी फादर्स हैं मदर कोई नहीं है, एंड मैथ्स एंड ऑल दैट सब में फादर्स हैं बट नो मदर. ओके, so initially anthropology was defined as study, but later on several female anthropologists started to contribute here, जैसे इंडिया में इरावती कार्वे, and western societies में Ruth Benedict, Margaret Mead and several other scholars, they started to contribute.